सभी का स्वागत है। सो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन। ओके, या फिर आप इसको एम्बेडेड सिस्टम भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये जो एम्बेडेड सिस्टम है इसकी क्या नीड है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम इज द सिस्टम, so with the help of this system we can control the things, or we can run the system as per our desired output, desired commands. So types of operating system: general purpose operating system, real time purpose operating system. तो अब इसमें क्या डिफरेंस है कि जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम देन रियल टाइम पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसमें ये डिफरेंस है कि जो रियल टाइम सिस्टम होती है, फॉर एग्जांपल वेदर स्टेशन। सो वेदर स्टेशन जो है ये सपोज अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो दोपहर के 1 बजे का जो वेदर था, मतलब जो हमारा जो स्काई है वो स्काई क्लाउडी है, देन ह्यूमिडिटी कितनी है, देन आफ्टर देन आफ्टर टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, ये सभी जो आउटपुट देने वाला है हमारा वेदर सिस्टम, वो 1 PM को क्या वेदर का रिपोर्ट था, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इन केस ऑफ रियल टाइम सिस्टम ओवर द जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो जनरल पर्पज में थोड़ा चल जाएगा आगे पीछे, लाइक फॉर एग्जांपल टाइम। ओके, सो एक डिजिटल वॉच ले लीजिए, उसमें अगर 2-3 मिनट आगे पीछे हो गए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर वेदर का रिपोर्ट अगर रॉन्ग जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर एक आधे फॉर एग्जांपल शिप को हम वो रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो वो शिप हो सकता है कि ये रॉन्ग डाटा की वजह से वो शिप में कुछ मिस हैपन हो सकता है। ओके, जो कि नहीं होना चाहिए। सो ये एक इम्पोर्टेंट रहता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा देन आफ्टर मेमोरी मैनेजमेंट, अगर मैं आपको हमारे एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम में जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि वी कैन कंट्रोल various outputs or inputs, not inputs, outputs. So kernel and interrupt latency, modularization support for networking and communication, development language support, non-functional requirement, cost, development and debugging tool availability, STM32F439 XX दिया है मेमोरी मैप। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो कि एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम या फिर कंट्रोल सिस्टम या फिर माइक्रो कंट्रोलर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर, वो वो स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखे, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। सो अगेन वी आर गोइंग टू displaying 75 on two digit 7 segment LED display. So it's all about the embedded system design. Okay,
सो आप मुझे बताइए कि आप एम्बेडेड सिस्टम के बारे में क्या क्या जानते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, सो दैट कि आपका अगर कोई मिसकंसेप्शन होगा तो वो हम क्लियर कर पाएंगे। सो क्या आपने एक वो एलईडी देखा है, डिस्प्ले, जो कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं हम जिसको, मतलब वो 0 से लेके 9 तक 10 इंटीजर वो डिस्प्ले करता है, 10 डिजिट्स वो डिस्प्ले करता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो पहले का 0 था वो कंप्लीट हो गए 10 डिजिट्स। ओके, तो ये काम कैसे करता है मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल ए ए बी सी डी ई एफ जी और एच, मतलब इसमें टोटल 8 टर्मिनल्स होते हैं, और उस 8 टर्मिनल को हम दो दो मोड से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला है कॉमन कैथोड मोड, और दूसरा है कॉमन 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 एनोड मोड, और दूसरा है कॉमन कैथोड मोड। ओके, सो एनोड ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। ओके, और कैथोड ये निगेटिव रहता है। तो एनोड जो है वो पॉजिटिव वाली साइड है, और कैथोड जो है वो निगेटिव वाली साइड है। तो आप अ, तो आप कॉमन एनोड को भी ये कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग जो 8 पॉइंट रहेंगे वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर के आयो जनरल पर्पज आयो पिन में जाएंगे। सो मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि मैंने लास्ट सेमेस्टर में मैंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन का बोर्ड पढ़ा था, और अभी जो पढ़ रहा हूँ मैं STM32 पढ़ रहा हूँ। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का थोड़ा और लुकिंग करते हैं, और वो है हमारा काफी पॉपुलर सब्जेक्ट, दैट इज द मॉडलिंग एंड कंट्रोल ऑफ पावर कन्वर्टर्स, MCPC। ओके, सो एक MCPC इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको पता है कि कन्वर्टर्स, बेसिकली पावर कन्वर्टर्स। सो पावर कन्वर्टर्स क्या है? पावर कन्वर्टर्स ये DC टू DC कन्वर्टर्स रहता है, जिसके अंदर हम जो हमारा आउटपुट है या फिर इनपुट है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ कन्वर्टर्स, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, कप कन्वर्टर, then after half bridge, full bridge converter. So these are the types of converters. Okay, boost converter, just we are going to take or looking buck boost converter. Then again this is interesting topic as per my concern, एंड ऑल्सो मुझे ये लगता है कि आपको भी इसके अंदर इंटरेस्ट आ ही जाएगा, क्योंकि ये जो अगेन वी हैव फ्लाईबैक कन्वर्टर। ओके, फ्लाईबैक नेम सजेस्ट अस, जो आउटपुट वाला साइड है वो कहीं तो भी इनपुट की इधर जा रहा है, इसीलिए इसको फ्लाई बैक बोलेंगे। ओके, अगेन दिस कन्वर्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोलेटेड कन्वर्टर। ट्रांसफॉर्मर आइसोलेशन वोल्टेज गेन, गेन इज स्टैंड फॉर के। ओके, और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है 1 2 3 4 5, VP, IP, IS2, VS1, VS2। ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट है मॉडलिंग एंड कंट्रोल ऑफ पावर कन्वर्टर्स, MCPC। ओके, अगेन दिस इज पॉपुलर सब्जेक्ट।
in the master in embedded control system. और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है वो है लार्ज सिग्नल एंड स्मॉल सिग्नल मॉडल फॉर पावर कन्वर्टर्स. अब ये भला क्या चीज है, लार्ज सिग्नल एंड स्मॉल सिग्नल मॉडल फॉर पावर कन्वर्टर्स? So dynamic behavior, just I go through. I'm I'm trying to read, and while reading, I will I will explain what exactly he's saying. So dynamic behavior is a non-linear to control law. Okay. So what is control law? To build linearize the model. So what is linearization and non-linearization? So where the two parameters behave equal or same, that is the system is linearized. But in case of two parameters behave unequal, so that system we can say, or we can called non-linearized system. Okay. So suppose we have the system linearized model valid only slight variation or and considered operating point. Okay. So one is the x dot, one is the x dot axis, and one is the x axis. Relation between large scale and small scale model. Okay. Large scale and small scale model. The initial model valid for entire definition range is called large signal model. For linear device, okay, linear, I already told you about the what is linear and what is non-linear. So so let us consider general case of continuous non-linear system. Dx by dt equals to f x of t into u of t, y equals to h of xt into u of t. Here x u y are state control output. Okay. X stand for state, y stand for control, and sorry, x stand for state, u stand for control, and y stand for output. I obtaining steady state model. By zeroing derivatives, one obtains steady state model. To find equilibrium point, y of e equals to g of u of e, u of e. What is g? So let's we see what is g. Building a small signal model, let us consider a small variation. So what is variation? Variation is the slight change in the uh, present to the previous. Okay. So that is the variation. Means what exactly change in the system, that is the variation. Okay. Means suppose at the point of 1, uh, suppose consider x parameter at the point 1. Okay. And again same x parameter at point 2. Okay. The magnitude for x at between two different location, that is 1 and 2 are different, that is the variation. Okay. And graph shows us the variation between two quantities. It may be current voltage, it may be whatever the physical quantity. Okay. uh, Current voltage, then after inductance resistance, then after capacitance resistance. So these are the electrical parameters. We can compare these parameters with the help of graph by plotting one quantity versus another quantity. Okay. We are going to good. Okay. Keep connected and keep exploring what I am saying. Okay. So y is established in response with u into e. Okay. Actually, e is the equilibrium.
The linearized system around specific equilibrium point is written as x equals to ax plus bu. Okay, so x tilde equals to ax tilde plus bu tilde. Okay, tilde is like shape like that. Okay, like that. That is the tilde. Okay, actually you heard first time this word. The linearized system around specific equilibrium point is written as x tilde equals to a ax tilde plus bu tilde, y tilde equals to cx tilde plus du tilde. That is the equation number 9. So simplification. Uh, no. See the equation number 10. That is the uh, d equals to delta n upon delta n into x comma u upon delta u uh, under bracket to the base x e u e, equation number 10. Okay, so we got d, that is the equation number 10. Simplification: neglect the product of variation corresponding to high end then second order terms in the Taylor series. Okay, so what is Taylor series? Please put your comments in the comment box. What is Taylor series expansion? Okay, Taylor series expansion. Then after simplifying terms corresponding to x equals to 0 steady state value. Okay, and which subject we are looking? We are looking modeling and control of power converters. Okay, MCPC, modeling and control of power converters. I am visible or not? Okay, so obtain small signal model for given system. X dot 1 equals to 2x1 into x2 minus x2 u. Then after x dot 2 equals to x1 plus x2, y equals to x1 square plus u. That is the equation number 2. System is set of equation. Okay, so again second method. Next, develop system by neglecting product of variation like x tilde 1 into x2 tilde x1 tilde 2 into x2, putting x dot 1 equals to x dot, actually small signal model. Okay, so from 15 state x2 is unstable, unstoppable, unobservable. Y tilde y equals to x1 tilde of x plus u of x. Okay, so we got final answer. Y tilde of s equals to ue into x1 tilde of x s plus u of s. So this is final answer. And what conclude on this expression, on this derivation? Actually we saw large signal and small signal model for the power converters. Okay, large signal and small signal model for power converters. So total number of equation 11. Then where is 12? 11, 12, 13, and where is 14? Okay, not if you consider 14, 15, 15. So total 15 number of equation in this small signal and a large signal model for the power converters. Small signal and large signal model for power converters. Okay, so it's all about the modeling and control of power converters. I would like to again small signal modeling for buck boost converter.
and we are going to stop here because due to size of this video getting too much lengthy, so that's why we are going to stop here. And please keep connected with our NMA, that is the Nitin Manohar Academy, and definitely we will we will maintain the bond between us such a kind of that, so that we can learn from to each other. Okay, not just I'm not interested in just I speak and you listen, and then okay, sir told me about the modeling and control of power converters, and now I am going to take a rest. No, I don't think you you getting so dependable. Okay, you need to ask how to prove, how to obtain, how to how to get this answer. You need to always at the correct places you need to ask the question with the help of this comment box. Okay, so it's totally totally depend on you. Okay, means at the correct place you can ask the question, and definitely I'll try to solve your problem or your whatever the question. Okay, we are going to stop here, and next topic I would like to share, that is the uh, PID controller. Okay, very popular controller actually. um, PID stand for the proportional integral derivative. Okay, PID stand for proportional integral derivative controller. Okay, PID controller very popular in the field of industry. Okay, we are going to stop here. Thank you.